बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आम तौर पे ऐसा होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रैक्टिकल नहीं करवाए जाते, और जब प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है तो एग्जामिनर को इन स्टूडेंट्स को, इन कैंडिडेट को पास करना मुश्किल हो रहा होता है कि पास कैसे करें इनको। रीज़न उसकी ये है कि जो मेजर पार्ट है वो है इस प्रैक्टिकल का, एक होता है डिसेक्शंस और दूसरा फ्लावर्स। बच्चों को नहीं आती। ना आने की वजह ये नहीं है कि बच्चे निकम्मे हैं, ना आने की वजह शायद हम टीचर्स की लापरवाही होती है। हम बच्चों को प्रैक्टिकल करवाते नहीं हैं। मैंने एक एक अटेंडेंट से कहा कि जाओ मको का फूल लेके आओ, मको का पौधा लेके आओ। कहता सर जी वो क्यों होता है? मैंने कहा कितने साल हो गए सर्विस को? कहता सर जी 10 साल हो गया। मैंने कहा 10 साल तुम्हें हो गए और तुम? कहता सर जी मैंने तो किसी ने किया ही नहीं। मैं एक और कॉलेज में गया, वो भी गवर्नमेंट का कॉलेज था, नाम नहीं लूंगा। वहां पर मैंने अटेंडेंट से यही सवाल किया। मैंने कहा मकोर लेके आओ। कहता ओ क्यों होता सर जी? तो यार ये सारी की सारी ब्रीड ही ऐसी है। यानी उसने भी कहा कि मुझे नहीं कहा गया कि मको का फ्लावर जो है वो लेके आओ। हम बच्चों को जब करवाएंगे नहीं तो यार ये बेसिक चीज है, और हम इनको ये पौधा भी नहीं दिखाते। एक दफा हमने एक बच्चे से कहा गंदम देखी है? कहता जी सर देखी है। तो हमने कहा कि वो गंदम को फ्लावर भी देखा है? कहता सर जी देखा है। तो हमने कहा कि गंदम को काटते कैसे हैं? कहता सर जी उस तरह से नाड़ कटी दी है। जस्ट लुक द पैथेटिक कंडीशन। हम बच्चों को फ्लावर्स दिखाते नहीं हैं, प्लांट्स दिखाते नहीं हैं। कभी वो हर्ब को दरख्त बना रहे होते हैं, कभी दरख्त को वो हर्ब बता रहे होते हैं। तो इनको दिखाने चाहिए। मेरी राय ये है, मेरी गुजारिश ये है, खास तौर पे टीचर्स से ना, और हमारे जो लैब अटेंडेंट्स हैं उनके साथ, उनसे ये मेरी दस्त बस्ता गुजारिश है। आज हम ये मको का पौधा लेके आए, इसको आप देख लें अच्छी तरह, ठीक है? दिस इज द फ्रूट, दिस वन इज फ्रूट, ओके? And this is known as berry type of the fruit, berry, okay? This is the flower, you see the flower, okay? And these are, the leaves, okay? It is a herbaceous plant, okay? There are many types of plants. Like there are certain plants which are herb in the family Solanaceae, yet there are the others which are shrubs. The others are there which are vines, so and so. So this is one of the shrub. Let's come to the practical regarding the flower, description of the flower, okay? Come on. Now I would like to tell you people the parts of the flower. चला दी। बिस्मिल्लाह। अगेन स्टूडेंट्स नजर आ रहा है आपको? जी सर। देखें ये इसकी ये वाली ये डंडी जो है, this stalk like structure is known as what? Pedicel. Pedicel, okay? And here is, this one is what? Can you see? Thalamus. This is thalamus, okay? And let me tell you people what this one is corolla. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, its corolla consists of what? How many? 5. How many petals? 5. Five. Okay, so it's a pentamerous flower. Look, this is what the petal. This one. This is the petal. This is the petal, and this one is the petal. Okay. Now you can see what here are, because this is small, very small flower. Okay, and this is what, this one is its calyx, this one, okay? Let me show you once again. This is what, this one is what? Calyx. This one, it is calyx. It consists of 5 sepals. Yes. 5 sepals, 5 petals, okay? And this world consists of what? The androecium. This is androecium, and androecium consists of stamens. These yellowish structures are what? The anthers. What? Okay. Anthers, male Okay. reproductive part. Yeah, the male reproductive parts. And let me now show you people the carpel.
let me try to separate. Here should be what this one. Let me take another flower. Look, it's again the flower. Okay, and here it is. I have separated the stamens. Okay, and you could see watch the carpel. Let me take another one. Let me take another one. This is You've got another mail. one. Pause it, please. Pause it, please. Got it? Boys, this one is what the carpel. I have separated all the other parts. Okay, and this is stigma. This is style, and the lowest part is known as what ovary, which is embedded in all the other parts. Here, this one is what ovary. Its ovary is superior. When you remove all the parts and ovary, you can see the ovary. Then ovary is said to be as superior ovary. Okay. Yes, sir. The flower would be hypogynous. Hypogynous यानी गायनी के थल्ले लगा हुआ, गायनी के नीचे, हाइपोगाइनस. ठीक है, आप वेरी फेयरली कह सकते हैं. अगर कोई जो है मर्द जो है वो अपनी बीवी के थल्ले लगा हुआ हो तो उसको कहते हैं वो हाइपोगाइनस है. ठीक है, याद रहेगा. ओके, गुड लक. आपको अगर समझ आ गया तो मुझे बहुत खुशी होगी. अगेन इसका ये फ्रूट मैंने पहले इंग्लिश में बताया था, आप उर्दू में देख लें. ये इसका फ्रूट है, इसको बेरी कहते हैं बेटा. ये वन, ये ठीक है, नजर आ रहा है. Yes, sir. ओके, ये दिस इज राइपन्ड फ्रूट. ओके, बेरी है, ये खाया भी जाता है. ओके, और इसके अगर आप लीव्स देखें, ये देखें, ये इसकी वेन्स हैं. ठीक है, और ये वेन्स हैं सारी. ठीक है, लीफ की जो डंडी होती है उसको पेटियोल कहते हैं. ओके, और जो फ्लावर की होती है Pedicel. उसको पेडिसल कहते हैं. ठीक है, मेरे ख्याल में अगर आपको समझ आ गया है तो मेरे लिए बहुत बहुत ही खुशी की बात है. अगर आपको अच्छा लगे तो ये दोस्तों को जो है ना ये शेयर कीजिएगा. और मेरा क्योंकि ये कमर्शियल चैनल नहीं है, आप अगर करेंगे तो आपको सवाब भी होएगा. ठीक है, थैंक यू वेरी मच.